Hello everyone, I am Priti Mahato and I am back with another chapter 4, which is map. So let's start. Globe can be, chapter is maps. As you studied in previous chapter, globe can be useful when we want to study the earth as a whole. Okay, अगर अर्थ को हम लोग को पूरा स्टडी करना है देन हम लोग ग्लोब का यूज करते हैं, बट वी वांट टू study only a part of the earth as about our country, states, districts, towns, village. It is a little help. ये माइनॉरिटी परसेंट में हेल्प करता है. okay? इन सच अ सिचुएशन वी यूज मैप, और ऐसे सिचुएशन में हम लोग मैप का यूज करते हैं. ओके, अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्राउन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू स्केल. ओके, बट इट इज इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप कम्प्लीटली. बट ये इम्पॉसिबल है कि उसको फ्लैटन में जो कि राउंड शेप है उसको कम्प्लीटली ये किया जाए. ओके, नेक्स्ट इज द मैप आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पसेस. ओके, वन मैप शो अ स्मॉल एरिया एंड अ फ्यू फैक्ट्स. अनदर मैप मे कंटेन as many facts as a big book. Okay, when many maps are put together we get a atlas. जब many maps एक ही जगह पे ये किया जाता है उसको हम लोग atlas बोलते हैं. okay, so atlas are various sizes, measurements drawn on different scales. okay, मैप प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन दैन अ ग्लोब. मैप ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है इन कंपेयर ऑफ ग्लोब. ओके, मैप आर डिफरेंट टाइप्स. ओके, फर्स्ट इज फिजिकल, पॉलिटिकल एंड थीमेटिक मैप्स. फिजिकल मैप्स showing natural feature of the earth such as mountains, plains, plateaus, rivers, ocean are called a physical map, और जिसको हम लोग रिलीफ मैप भी बोलते हैं. ओके, पॉलिटिकल मैप्स showing cities, towns and villages and different countries and states of the world with their boundary are called पॉलिटिकल मैप. पॉलिटिकल मैप में जो भी स्टेट, सिटीज, टाउन, कंट्रीज का बाउंड्री जो ये शो करता है उसको हम लोग पॉलिटिकल मैप बोलते हैं. ओके, सो नेक्स्ट इज थीमेटिक मैप्स. सम मैप्स फोकस ऑन अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज रोड मैप्स, रेनफॉल मैप्स, मैप्स शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट्स, industries, etc. are known as thematic maps. Okay, next, there are three components of maps. First is distance, फिर हो जाएगा direction, next is symbol. Okay, so distance is maps are drawing which reduce the entire world or a part of it to fit on a sheet of paper. Or we can say maps are drawn to reduced scales. Okay, but this reduction is done very carefully so that the distance between the places is real. Okay, it can only be possible when a small distance on paper represents a large distance on the ground. Okay, therefore a scale is chosen for this purposes. Okay, scale is a ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map. The distance between your school and your home is 10 kilometers.
Okay, so if you show this 10 km distance by 2 cm on a map, it means 1 cm on map will show 5 km on the ground. Okay, so 1 cm is equal to 5 km. नेक्स्ट इज दस स्केल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन एनी मैप. जो स्केल है वो बहुत जरूरी मतलब इम्पॉर्टेंट रोल ये करता है एनी मैप, किसी भी मैप के लिए. इफ़ यू नो द स्केल you will be able to calculate the distance between any two places on a map. Okay, when large areas like continents or countries are to be shown on a paper, then we use a small scale. Okay, 5 centimeter on the map shows 500 kilometer of the ground. It is called small scale map. Okay, so when a small area like your village or town is to be shown on the paper, then we use a large scale, that is 5 centimeter on the maps shows 500 meters only on the ground. Okay, it is called large scale map. Next is large scale maps give more information than the small scale maps. जो लार्ज स्केल मैप होता है वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है इन कंपेयर टू स्मॉल स्केल मैप्स. ओके, सो नेक्स्ट इज डायरेक्शन. Most maps contain an arrow marked with the letter N at the upper right hand corner like this. Okay, so this arrow shows the north direction. It is called north line. इसको हम लोग north line बोलते हैं, जो कि ये north direction को represent करता है. Okay, so when you know the north, you can find out other directions. For example, east, west, south. Okay, next is there are 4 major directions. Okay, 4 major डायरेक्शन कौन कौन सा है? फर्स्ट इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स. इसको हम लोग कार्डिनल पॉइंट्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट. ओके, दिस इज कॉल्ड कार्डिनल डायरेक्शन और कार्डिनल पॉइंट. ओके, सो नेक्स्ट इज other 4 intermediate direction are northeast, southeast, northwest, southwest. Okay, so next is we can locate any place more accurately with the help of this intermediate direction. Okay, we can find out the direction of a place with the help of the compass. हम लोग direction found कर सकते हैं with the help of a clinometer, compass or only compass. Okay, it is the instrument used to find out main direction. ये एक instrument है जिसका नाम compass है, जो हम लोग को main direction found करने के लिए helpful करता है. Okay, its magnetic needle always point out towards north and south. Okay, north south direction में इसका magnetic needle हमेशा रहता है. ठीक है, so next is symbol. It is the third important component of a map. Okay, it is not possible to draw a map the actual shape and size of different features such as building, roads, bridge, trees, railway line, etc. Okay, so they are shown by using certain letters, sets, colors, pictures and lines. This symbol give a lot of information in a limited space. Okay, और ये symbols बहुत सारा information देता है, वो भी limited space में.
With the use of these symbols, map can be drawn easily and are simple to read. वो बनाना भी easy होता है और पढ़ने में भी आसानी होता है. Okay? So, even if you don't know the language of an area and therefore cannot ask someone for direction, you can collect information from maps with the help of these symbols. Okay. Maps have universal language that can be understood by all. Map एक universal language है जो कि सभी को समझ में आता है. Okay. There is an international agreement regarding the use of these symbols. Okay. There are called conventional symbol, जिसको हम लोग conventional symbol भी बोलते हैं. Some of the conventional symbols are given below. Okay. For example, this is railway line का. Okay. Broad gauge इसका ये सैम्पल होता है. मीटर ये, रेलवे स्टेशन ये. ओके. रोड्स का मेटल ये स्ट्रेट 2 होगा. अनमेटल का ब्रेकिंग स्ट्रेट होगा. बाउंड्री इंटरनेशनल बाउंड्री का ये है सिंबल. ओके. उसके बाद स्टेट का ये है. फिर डिस्ट्रिक्ट का देखो ये है. एंड दिस इज फॉर रिवर सिंबल एंड दिस इज फॉर वेल. एंड other is this is symbol of tank, this is canal, bridge, temple, church, mosque, chhatri, post office, post and telegram office, police station, settlement, and this is graveyard, trees and grass. Okay, so this is the symbol of grass. So various colors are used for the same purposes. different मतलब बहुत सारा ऐसा कलर है जो कि सेम पर्पस के लिए यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, ब्लू इज यूज्ड फॉर शोइंग वाटर बॉडीज. ओके. ब्राउन फॉर माउंटेन एंड येलो फॉर प्लेट्यू एंड ग्रीन इज यूज्ड फॉर प्लेन्स. ओके. Sketch. Next is sketch. A sketch is a drawing mainly based on the memory of spot observation and not to scale. Sometimes a rough drawing is required of an area to tell where a particular place is located with respect to other place. Okay. So, suppose you want to go to your friend's house, but you don't know the way. Your friend may make a rough drawing to show the way to his house. Okay. Such a rough drawing is drawn without scale and is called sketch map. और जो कि ऐसा मैप जो कि बिना स्केल के बनाया जाता है उसको स्केच मैप बोलते हैं. ओके. So next is plan. A plan is a drawing of a small area on a large scale. Okay. A large scale map gives a lot of information, but there are certain things which we may sometimes want to know. Okay. And this is the last page. And there is also little information. For example, the length and breadth of a room which cannot be shown in a map at that time we can refer drawing down to scale called a plane. Thank you so much, guys.